Good morning, friends. Today's topics mainly are the right circular cone. That is a very important topic for my engineering students. One problems come to the every times in your examination are that topics. So take care that type of problems. And undergraduate students is also very helpful. Is the right circular cone the when the coordinate geometry systems. So first year, I please before watching my videos, please likes my videos, शेयर करें फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें एंड वैल्यूएबल कमेंट दें फ्रेंड्स, जिससे कि मैं चैनल्स को और अपने कैसे इम्प्रूव कर सकूँ. सो नाउ लेट्स गो फर्स्ट. व्हाट इज द डेफिनेशन एंड व्हाट इज द रिक्वायर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि राइट सर्कुलर कोन के इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या जो मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रिक्वायर्ड है एंड व्हाट इज योर डेफिनेशन इन सम थिंग्स. सो कम टू द पॉइंट्स हियर. Given this right circular cone, a right circular cone is the surface. Right circular cone is the surface generated by the straight line, that is generated by the straight line which passes through the fixed line through a fixed point, that is that is here, which is fixed point, and which is axis means this is fixed line. So here I can pass by straight line generated by the straight line here and passes through the fixed line and through the fixed points. So fixed line and fixed points. Next, fixed point is the called vertex, which is called vertex. Fixed point is the called vertex, and fixed line is the axis. Fixed line is called axis, and constant angle, that is your angle, is called constant angle is called semi-vertical angle. And the section of RCC means right circular cone, RCC means right circular cone, by the plane perpendicular to the axis. That means that section, ये section आपका है, so that is called circle here, which is called, when say perpendicular to the plane, it means here that is represented by circle. So what is the needed data first to find out the equation of right circular cone? So first needed data must be important, coordinate of vertex. ठीक है, the first needed data, first important needed data. So needed data is first needed data, coordinate of vertex. Yeah, first semi vertical angle theta. Second, direction ratio of axis is important. Direction ratio of axis. Suppose मैंने consider कर लिया there is A1, B1 and C1. And third, coordinate of vertex. Coordinate of vertex. So suppose मैंने consider कर लिया that is x1, y1 and z1. So coordinate of vertex, what is the use? Coordinate of vertex means that type to find out the direction ratio of line OP. OP लाइन का डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं आप. एक्सेस का डायरेक्शन गिवन हो तो एंगल बिटवीन टू लाइंस यूज एंड फाइंड आउट. सिंपल मेथड, बहुत ही सिंपल है. इससे इजी प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिलेंगे. दैट इज अ बहुत ही इजी टास्क है और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम. आपको दोनों लाइंस का, ये दोनों लाइंस है, इनके आपको डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लेने. थीटा गिवन है तो आप गिवन फाइंड आउट कर लेंगे एंड इजीली फाइंड आउट. सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ, सपोज व्हाट इज द direction
ratio of OP. क्या लेंगे डिफरेंस बिटवीन मीन्स x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1. Suppose that is A2 B2 and C2. So up next, so angle between them, what is the angle between them? Theta is angle. So angle between two lines, everyone know that is angle between two lines is cos of theta is equal to a1 a2 b1 b2 c1 c2 under roots square root of here a1 is square b1 is square plus c1 is square and second a2 square b2 square plus c2 square. That is a formula angle between them. So put all these value and evaluate and we get answer. So put here cos of theta is equal to a1 means a1 and the axis coordinate, that is the direction ratio here a1 a2 a1 b1 c1 and here is find out हमने कर लिया है. This is the x minus x1 y minus y1 and z minus z1, that is a2 b2 and c2. So here a1 into x minus x1 b1 into y minus y1 plus c1 into z minus z1 divided by square of this. So a1 is square b1 is square plus c1 is square and under roots next x minus x1 whole square y minus y1 square plus z minus z1 square, that is cos theta. So now solving this, solve above equation, we get required solve above equation, we get required equation of RCC, right circular cone. So that is a general method is finding how to find. first आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, cos थीटा इज गिवन होगा आपको, थीटा गिवन. सो दैट इज मेथड फाइंडिंग द राइट सर्कुलर कोन इक्वेशंस. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है. तो टेक द सम प्रॉब्लम्स एंड तो आपसे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा. तो टेकिंग द सम प्रॉब्लम्स हियर, फर्स्ट राइट डाउन, आफ्टर देन कैलकुलेशंस. So there are two types problems होते हैं friends. First, जब when angle is given, second angle is not given, means थीटा है तो एंगल गिवन होगा, सेकेंड एंगल इज नॉट गिवन होगा. सो कैसे कैलकुलेट्स करेंगे हम. तो फर्स्ट एंगल इज गिवन होगा, दो प्रॉब्लम्स करेंगे हम, एक एंगल के लिए और एक विदाउट एंगल्स के लिए. सो कम टू द पॉइंट्स. So here taken the two problems, तो इन दोनों सेम प्रॉब्लम्स हैं, दोनों में से एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, आप एक ट्राई टू सेल्फ मेथड्स. तो फर्स्ट here is given the find the equation of right circular cone whose vertex is given and axis is given and semi vertical angle is given. Means first, so draw the figure here. Cone yes, this is O means vertex, and vertex coordinate is given 1 minus 1 and 2. Vertex coordinate is given. Next here this is P x y z. on जनरेटर पे कोई पॉइंट्स कंसीडर करेंगे. Equation of axis is given and equation of axis is given x minus 1 upon 2 and equal to y plus 1 upon 1 equal, that is z minus 2 upon 2. That is equation of axis is given. Which is
again 1 by checks. So in that case here is given minus 2. So here minus 2 questions. Okay. So axis is given. So what is the direction ratio? Direction ratio of 2 minus 2 1 minus 2, that is direction ratio of line is already is here. Find out the direction ratio of line. So first what is the needed data, and theta is here given. So आपको needed data क्या क्या find outs होते हैं. First direction, first semi vertical angle, that is a needed data. The first point is here. So first up let p x y z be any point on generator. हमने एक पॉइंट्स कंसिडर कर लिया, दिस ऑन विच इज द जनरेटर. तो पी एक्स वाई जेड एनी पॉइंट ऑन द जनरेटर. ये तो फर्स्ट स्टेप इज अ फाइंड आउट्स. नेक्स्ट अब फर्स्ट पॉइंट्स में जाते हैं. तो सेमी वर्टिकल एंगल, फर्स्ट सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, थीटा. सो ऑलरेडी इज गिवन प्रॉब्लम्स 45 degree already given, so do not require the finds. Second points, coordinate of vertex या फिर direction ratio of axis, direction ratio of axis. So direction ratio of axis, suppose that is O and here x, OX R. What is the direction? Equation of axis is given. So 2 1 minus 2 is the direction. So 2 1 minus 2, because here that is x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, and this is z minus z1 upon c. This is the ABC, the direction ratio. Next, third, coordinate of vertex. Coordinate of vertex R. Yeah, sorry, is. So coordinate of vertex is already given 1 minus 1 and 2. So given है, so आप that lines का क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करिए. तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी आर कर देंगे. सब्ट्रैक्शन मतलब x minus 1, y plus 1 and z minus 2, that is the direction ratio of line OP. That is find out. So which is A1 B1 C1 and A2 B2 C2 here. So next, using the formula, तो आपने already second problem से write down here, already given a second problems is write down. Next one, so using, so that is here A1 B1 C1. So cos of theta, A1 B1 A1 A2 B1 B2 plus C1 C2 divided by under roots A1 square B1 square plus C1 square, and here A2 square B2 square plus C2 square. That is the formula. So put this value, cos of 45 degree, here A1 A2 2 into x minus 1 plus 1 into y plus 1 and plus here C means minus 2 into z minus 2. This is a minus 2 and z minus 2 divided by here. So अब A1 square B1 square and C1 square, so means 2 to the 4 plus 1 plus 4 9 means 4 plus 1 plus 4 under root and another square root of this. So square root of this means x minus 1 whole square here plus y plus 1 whole square plus z minus 2 whole square. That is here. The simplification of next, how to simplify this? Put to squaring on the both sides, but first here is write down 1 by root 2 here
2x plus y minus 2z, numerator simplify, minus 2 plus 1 plus 5. So how much we get? Total simplifications, so minus 2 plus 1 and plus 4, so 6 and 5 means plus 5 divided by here 9 and under root this x minus 1 whole square, y plus 1 whole square plus z minus 2 whole square. That is the representation. After then, next work. That calculation, if one by check, it's minus 2 here, 1 plus 1 and 2 to the 4 plus 4, 5 minus, sorry, 3 here, not 5, that is 3. So एक याद रखें, माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी आपको 0 मार्क्स दिला सकता है. सो दैट इज द माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हियर. अब फर्स्ट स्क्वायर रूट गिवन है तो आपको स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है. तो हाउ टू द कैलकुलेट स्क्वायर? द स्क्वायर बोथ साइड्स, सिंपल, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स कर दीजिए यार. So 1 upon root 2 means total 2 here goes and that is 9, means we get here 9 x minus 1 whole square, y plus 1 whole square, z minus 2 whole square is equal to 2 into here 2 into 2x plus y minus z, sorry, minus 2z, so minus 2z, 2z plus 3 square. एग्जाम्पल. सो आप इसको अब सिंप्लीफाई करिए एंड देन इवैल्यूएट. मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप सिंप्लीफाई करके फर्स्ट इनसाइड ब्रैकेट सॉल्व करिए एंड वी आर द यूजिंग द फार्मूला a plus b plus c plus d whole square and फिर then evaluate. Here use the formula a plus b plus c plus d square. So a square, b square, c square, d square plus 2ab plus 2ac plus 2ad. First multiply, that is the ab, ac, ad first, plus 2bc plus 2bd and next plus 2cd. So अब use this formula and simplify. Then what is the answer? Means write down करो final answer. अब try करें 5x square plus 8y square plus 13z square minus 4xy plus 4yz plus 8xz minus 30x plus 12y minus 24z plus 45 equal to 0. So that is the answer. Simplify, then we get answer. Using the transform left hand side, then we get answer. So similarly we try the second problems and अब मैं एक दूसरा पॉइंट लूँगा फ्रेंड्स, और जो कि जब हियर एंगल इज नॉट गिवन, हियर डायरेक्टली एंगल इज गिवन, सो यूजर कैलकुलेट्स, बट जब एंगल इज नॉट गिवन, सो हाउ टू फाइंड द एंगल्स, आफ्टर देन get the solution, try solution. So first next problem taken here, the angle is not given, so how to solve? So now have taken the two problems friends here. टू प्रॉब्लम्स हैं और एक प्रॉब्लम मैं को सॉल्व करने वाला हूँ और एक आप खुद ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए. सो जब एंगल इज नॉट गिवन,
So first general information about that, after then solutions. So find the equation of right circular cone. RCC means here मैंने right circular cone लिखा है right start form, but आप exam में full write down है. Passes through the points 1, 1, 2 and has its axis as the line. Equation of axis given है, vertex at origin given है, but angle is not given. Next, here is same. Find the equation of cone passing through the points here given and vertex with vertex at origin already given and axis parallel to the line means axis जो given है वो parallel to the line है. तो what is the equation of what is the direction ratio of axis? जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा वही डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्सिस होगा. सो दैट इज योर टेक केयर. इट मींस DRS ऑफ एक्सिस. हिंट ओनली. सो दैट इज योर R. हो जाएंगे 5, 1 and 1. दैट इज रिमेंबर दैट लाइंस के लिए. सो आप जनरली फाइंड आउट कर दैट प्रॉब्लम्स के लिए. फर्स्ट प्रॉब्लम को here सॉल्व करने वाला हूँ. दैट इज हाउ टू सॉल्व दिस फर्स्ट प्रॉब्लम्स. So first we will draw the figures. Again here P, X, Y, Z कोई points है on the generators. Vertex coordinate is already given 0, 0, 0. Here is angle theta and which is passes. Generator passes through the 1, 1, 2 is given already. O, P, Q suppose 1, 1, 2. And equation of axis. Equation of axis is given. What is this? 6x equal to minus 3y equal to 4z. But इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है आपका? That is a convert to the standard format. That format that is x minus x1 upon a, y minus y1 upon b and z minus z1 upon c. That is the standard format. तो क्या करेंगे आप इन तीनों का LCM. Find out LCM or divide this. So 6, 3, 12, 4. LCM is 12 divided by 12 everywhere. So that case we get x upon 2. Here y upon 3 4 is a minus 4 and z upon 3. So that is conversion of this. Dividing by this. So that is a conversion. So direction ratio of axis find out हो गया आपका 2 minus 4 3. So जो डाटा पहले फर्स्ट राउंड आउट हो गए आप उसको फाइंड आउट करिए. And here that is OQ. तो हम क्या करेंगे पहले OQ का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करेंगे. डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्सिस के हेल्प से थीटा फाइंड आउट करेंगे. आफ्टर दैट फिर अनदर. सो फर्स्ट योर वर्क फाइंड let P X Y Z be any point on the generator. आपको फर्स्ट वर्क है कि फाइंड आउट द थीटा आफ्टर द नेक्स्ट वर्क. सो हियर सो डायरेक्शन आप क्या करेंगे. डायरेक्शन रेशियो ओपी और डायरेक्शन रेशियो एक्सिस गिवन है तो उन दोनों के हेल्प से हम डायरेक्शन एंगल थीटा फाइंड आउट करेंगे. तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ OQR. व्हाट इज दिस? 1 minus 0 means 1 minus 0. Here 1 minus 0 again and 2 minus 0 means this is 1 1 2. Next direction ratio of axis. Ratio of axis. So axis are क्या देंगे 2 4 minus 4 and 3. So अब angle between them that is the cos of theta. What is the cos of theta? Product of this means 1 into 2 plus 1 into minus 4 plus 2 into 3 and square root of this. Yeah. So 1 plus 4 and second 2 4 plus 16 plus 9. 2 plus 4 plus 16 plus 9 and simplify. Then we get तो सिंप्लीफाई कर लीजिए. cos of theta equal 2 and 6
So 2 0 6 4 8 means 4 total. Calculation 5 5 6 root 6 and here root 29 16 20 29. Otherwise 4 upon under roots. 6 9s are 54 and 6 2s are 12 and 5 17. So cos theta is equal to 4 upon 174. That is the value of find outs. अब next work, find direction ratio of OP. क्योंकि हमें जो वर्क फाइंड करना OP, तो your target is find out the direction ratio of OP is fast. Direction ratio of OP. So difference x minus 0, y minus 0 and z minus 0. ये इस पॉइंट का वर्क फिनिश हो गया है. 1 1 2 का वर्क क्या होता है? सिर्फ थीटा फाइंड आउट करने के लिए, जब व्हेन पासेस थ्रू समथिंग, सो थीटा इज फाइंड आउट. अब नेक्स्ट वर्क हियर, सो OP, दिस मींस x y z and direction ratio of axis is already given है. Direction ratio of axis r 2 minus 4 3. So cos theta, theta angle दोनों के बिटवीन सेम ही होगा. So cos of theta is equal to this. So cos of theta equal here means दोनों का प्रोडक्ट्स 2x minus 4y and plus 3z divided by square root of this 4 plus 16 plus 9 and here x square y square z square and cos of theta is already here. अपने find outs किया है, it's the 4 upon 174, so that is the cos of theta. So cos theta here is find out, so 4 upon 174 is write down under roots equal to 2x minus 4y plus 3z and here 16 29 and square root of this x square y square plus z square. So आपको simplify करना है here. Simplify this, squaring on both sides and calculate this. Squaring on both sides. Squaring both sides. So 4 upon 74, 116 here. 16 upon 174 equal to 2x minus 4y plus 3z square. Here 29. That is the 29 and here x square plus y square plus z square, that is a cancel, is 6. ठीक है, and here so this is 16 x square y square plus z square equal to 2x plus 4y plus 3z whole square here. So अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, a plus b plus c whole square यूजिंग द फार्मूला सिंप्लीफाई. मैं सिंप्लीफाई नहीं करने वाला हूँ, आप खुद करेंगे here. So using the formula here, simplify means a plus b plus c whole square, a square b square c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. That is the formula. So आप सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या क्या फाइंड आउट हो सकता है. मैं फाइनल आंसर राइट कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई एंड वी गेट दिस. So here write down this is 4x square plus 40y square plus 9 of z square, sorry 19z square minus 48xy minus 72yz plus 36zx equal to 0. So which is required equation of cone?
तो ये दैट मेथड्स हैं, ये कुछ आप चेक कर सकते हैं, बुक्स में ऑलरेडी गिवन होगा दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम. सो मोर देन प्रॉब्लम सॉल्व करो स्टूडेंट्स एंड टू गेट द गुड मार्क्स. So that is general. So which is required, which is required equation of RCC, right circular cone. So that general methods here, so when angle given and second angle is not given, so that type of second problem मैंने give दिया है, तो already आप solve करो and try to solve and what is your answer. Thank you, bye bye.